Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm your psychology mentor at Study Capital. In today's video, we're gonna be knowing about the career options in psychology. So I know this is a very important and very genuine question for all the aspirants who are thinking of doing masters in psychology, and especially this is most important for those people who are already settled in some career, they are doing job but they love psychology as a subject and they are from non-psychology background and now they are thinking of shifting gears in their life. Now they are thinking that they should shift from their original subject to the new subject, and that is psychology. And is it worthy? Is it the right call? Are they going to be successful with this attempt or not? So today I'll be telling you about what are the general career options in psychology, because let me tell you, this is a very basic human fact that psychology is a subject of human beings, right? You understand and study human beings. So wherever in this world there are human beings, there can be a scope of a psychologist in any way. All right? So यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, that if I'm preparing for the JEE exam, so I know that within 5 or 6 years I'll be an engineer. If I'm preparing for the NEET examination, so I know that within 5 or 6 years I'll be a doctor. So somewhere we know what is our destiny. But with psychology, even you don't know after completing masters of PhD that whether you are going to teach in a university or in a school or in a institute or in a college, whether you are able to practice with your own, or you will join a hospital or an NGO or a government organization, whether you are a counselor by your own, or whether you will be practicing with some company, right? So there is no as such certainty, and this uncertainty is again beautiful thing and a dreadful thing, because when we are not sure about the future, efforts do become less. All right. So my whole motto for this video is to make you understand this thing, that if you are feeling in a circle, that you are feeling that you are nowhere, you are doing everything to find out your interest, that where you can be sitting within maybe 5 or 6 years. This is absolutely tough because the subject is very uncertain. But again, I am here to tell you the most certain things which you can aspire for. So if you're completing your masters, if you're going with the higher studies, right? So I'm going to tell you about what are the most certain options, right? अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सारे अच्छे ऑप्शंस हैं. There is nothing like good and bad. Everything is preferred. जो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है वो अच्छी है, जो नहीं है वो नहीं है अच्छी. सिंपल सी बात है. So I'll be telling you the most certain jobs या certain profiles जिनके लिए आप थोड़ा सा aspire कर सकते हो, and not if exactly that, तो उसके around आप चीजों को इधर उधर देख सकते हो. So my first thing would be the clinical and health psychology. All right. So I know अभी clinical psychology को लेके RCI के इतने सारे guidelines आ रहे हैं, they are very confusing. So I'll be making a separate video on that thing. So don't worry about that. But in a very general sense, is a very simple process to become a clinical psychologist, right? So clinical psychologist is a psychologist who take clients or patients, and the psychologist is trained to give a therapeutic treatment to the patients of critical disorders such as schizophrenia, delusional disorder, depressions, mood disorder, etc. So in this, the role is actually very critical and sensitive. And for becoming clinical psychologist in India or in a category of health psychologist, so specifically I will be talking about the clinical part, you have to complete MPhil, right? I know there is a lot of confusion regarding MPhil, but till now, till this date, when I'm making this video, there are many institutes who are offering MPhil, but they will be discontinued by 2026. So as per new RCI guidelines, you have to complete MPhil or the MSci program, whatever the current situation will be, right? Because I don't know, maybe जब तक ये वीडियो आए कुछ नया गाइडलाइन आ जाए, right? That's why I'm saying कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, right, तब तक यही सिनेरियो है. So simple thing is,
आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हो इन साइकोलॉजी इन एनी फील्ड, डजेंट मैटर, बट साइकोलॉजी का मास्टर्स होना चाहिए, राइट? वो क्लिनिकल हो, काउंसलिंग हो, ओबी हो, जनरल हो, एमए, एमएससी, कुछ भी हो, it should be masters in psychology. Then there are so many entrance exams for the MPhil which are conducted by different institutes and universities. आप उसको fill up करो, if you crack it, आपका MPhil में admission हो जाएगा, right? एम साइक के लिए थोड़ा सा चीजें अलग होती हैं, उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे. देन देयर इज दिस काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, जो एनजीओज में आप काम कर सकते हो, प्राइवेट प्रैक्टिस आप कर सकते हो, स्कूल काउंसलर्स आप कर सकते हो. देयर आर सो मेनी बिग इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग्स, वहां पे काउंसलर्स की जरूरत होती है. देयर इज अ मैंडेट, राइट? तो ये सारी चीजें आप काम करते हो. हेल्थ साइकोलॉजिस्ट भी क्रॉनिक इलनेस को लेके या स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज के लिए ये सब काम करते हैं. बट मेजरली इसमें जो आपका फेमस जो पोर्शन होता है जिसके लिए लोग मैक्सिमम अप्लाई करते हैं, इट्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, right? And after that they will do some diploma and all those things for the counseling and everything. So this is for the clinical psychology part. Then there is OB part. What if I don't have an interest in clinical? What if I'm more interested toward the corporate, toward the business part, toward the organization part? Then here it is, the industrial and organizational psychologist. So IO psychologist basically works as in recruitment, as an HR. You can also work as a counselor in the big companies, right? You provide training, you provide solutions to the workplace productivity, right? How companies' productivity can be increased. You design plans, you design interventions for the employee satisfaction, to reduce their job dissatisfaction. ये सारी चीजों के लिए आप करते हो. कॉर्पोरेट ट्रेनर होते हैं. So basically you will be using your complete psychology knowledge to improve the employee performance and overall company growth. तो इसमें बहुत सारे वैरायटी के रोल्स होते हैं. So you can target this also. There is not no such as such eligibility, है ना? कोई स्पेसिफिक चीज की हो सकती है, बट एज सच कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती है आईओ साइकोलॉजिस्ट की. आपको मास्टर्स करना होता है, एंड देन इफ यू आर डूइंग योर पीएचडी इन आईओ टॉपिक, सो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है. साइकोलॉजी में एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, दैट द मोर हायर यू विल गो, राइट, योर क्रेडिबिलिटी विल बी इंक्रीजिंग. तो आपने अगर पीएचडी कर रखी है, आपने फिर एमफिल भी कर लिया, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाती है, एंड दैट गिव्स यू एक्सपीरियंस. सो ये आपका एक आईओ का फील्ड हो सकता है. Then the second is basically educational and child psychology. So this is basically like a school psychologist or the guidance counselor. So many government have gave this mandate that schools must be having the school counselor, because the stress of the exam, stress of the curriculum, big syllabus, this is all causing so much mental trouble to students. So there is a high need of guidance counselor, school psychologist. There are so many state governments who give release vacancies for specifically these psychologist post, right? तो आप इन सब चीजों के लिए भी अवेयर रह सकते हो. स्पेशल एजुकेटर की काफी सारी वैकेंसीज आती हैं. देयर आर सो मेनी जॉब ऑप्शंस, राइट? देयर आर सो मेनी प्राइवेट एनजीओज एंड स्कूल्स हु आर वर्किंग विद स्पेशल चिल्ड्रन, पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड, राइट? तो ऐसे स्कूल्स के लिए किस तरह के उनके लिए इंटरवेंशंस प्रिपेयर करने हैं, किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, उनका क्या सोल्यूशन है, इस फील्ड में भी आप काम कर सकते हो. Then there is this very interesting field which is forensic and criminal psychology, right? So in forensic psychology, you basically work with law enforcement, prisons, courts, right? You help in criminal profiling, rehabilitation of offenders. आप उनके लिए programs develop करते हो, right? And अगर आप juvenile justice board से related में काम करते हो, I was fortunate enough that me and my colleague Mansi Tripathi, we wrote a paper related to juvenile delinquency. So we had seen how the juvenile justice board proceedings occur. We have talked to the people, the magistrate, the NGO workers there who are working, the policemen who are working there. So we have did this whole research thing. So yeah, it was amazing experience. And in India, there's a very emerging scope for the forensic and criminal psychology. It's like NFSU is one of the big college for the forensics and criminal psychology. So this is basically more towards the legal part, right? You work with the crime scenes, crime related people, policemen. So you basically psychological profiling of the criminal, ये सारी चीजों में आप basically यहाँ पे काम करते हो. एंड इसके लिए भी आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए. एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर आप मास्टर्स इन क्रिमिनल साइकोलॉजी या मास्टर्स इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी करते हो, तो स्पेसिफिक कोर्सेज भी होते हैं. अदरवाइज इवन इफ यू हैव डन द सिंपल मास्टर्स, आप इसके बाद पीएचडी कर सकते हो या आप डबल मास्टर्स कर सकते हो. इट इज़ अप टू यू.
सो साइकोलॉजी अगेन इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट जहाँ पे कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी नहीं होती है बहुत ज़्यादा रिजिड कि आपको इस चीज़ के लिए ऐसा ऐसा ही करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें फ्लूइड होती हैं। देन देयर इज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। आई एम अवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मास्टर्स कराती है। सो यू वर्क विद डिफरेंट प्लेयर्स, एथलीट्स, राइट? यू वर्क ऑन टीम मोटिवेशन, टीम प्रोडक्टिविटी, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा होता है, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट कैसा होता है, राइट? सो यू मस्ट बी सीइंग इंडियन क्रिकेट टीम, इन बैडमिंटन टीम, वुमेन क्रिकेट टीम। तो इन सब के साथ भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं जो इनका स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनका मेडिटेशन प्रिपेयर करना, इनका जो स्ट्रेस टॉलरेंस है, रेजिलियंस ट्रेनिंग है, एंगर मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ों के लिए भी बिहाइंड द सीन्स में साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं। सो यू कैन वर्क विद द BCCI, यू कैन इवन वर्क विद ICC। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ से मिल सकती हैं। Now, before continuing to the video, if you are preparing for the CUET entrance exam 2026 and if you like my content till now and you want to prepare with someone who will give you the perfect guidance, you can consider my course which is live right now, and that is the Mahayotha batch. This batch will be the one-stop solution batch for every problem you're going to be facing during your preparation. This batch will be helpful for the GATE also, for all other individual university exams, which is like Jamia, Allahabad University, Christ, NFSU. So my content is tailored for every such exam. You will be having live classes, which is a foundation batch where I'll be teaching you from the scratch at what is psychology, what is science, why psychology is a science. यहाँ से हम चीजें शुरू करते हैं live classes में, and I will make you an expert at master's level so that you can crack the master's exam just like a cakewalk. All right, you will be given the recordings of all the classes. In case अगर आपसे live classes miss हो जाती है तो आपके पास recording भी उस class की available हो जाएगी. Then study materials के form में you will be given PDFs, PPT notes. तो इसके अलावा आपको ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. You will be given PYQs, you will be given MCQ books जिसमें more than 3-4,000 MCQs हैं. ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. यू विल बी गिवन द फ्री टेस्ट सीरीज जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं एंड में, जो एग्जाम के 2 महीने पहले शुरू होते हैं. इन सारी चीज़ों का एक्सेस भी आपको दिया जाएगा एंड यू विल बी पर्सनली कनेक्टेड विद मी. सो ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी दूसरे टीम मेंबर से या किसी मॉडरेटर से बात करके डाउट पूछना हो. यू विल बी हैविंग माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर एंड आप मुझसे किसी भी तरह के डाउट पूछ सकते हो 1-to-1. आप मुझसे मेंटोरशिप के लिए जुड़ोगे. I'll be guiding you with your career options, with your stress management. जिस भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही है you will be in contact with me. Other than this, हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, एंड ये सारी चीजें आपको महायोद्धा बैच में मिलेंगी. बट देयर इज वन स्पेशल थिंग विद दिस बैच. If you are purchasing this batch right now, you will be given access to all our upcoming batches. Alright? So नवंबर में मेरा एक और फाउंडेशन बैच होगा, वो उसका भी एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा. देन फरवरी में मेरा एक और विजेता MCQ बूस्टर बैच आएगा जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस में ऑलमोस्ट 3000 MCQ सॉल्व करेंगे. बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग और यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि MCQ सॉल्विंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है. सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस महायोद्धा बैच में मिलेंगी. So you can download the Study Capital app right now. You can go to the PG course section and there you will find this course. Right? So join in the Mahayodha batch and you can continue your study or you can start your preparation just right away right now from tonight. And the last and most important thing I'll say, it is like the research and academia. बहुत अच्छा स्कोप होता है, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ पे ट्राई करते हैं एंड दैट इज टू बिकम अ टीचर और प्रोफेसर इन साइकोलॉजी. सिंपल है आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है या फिर आपको PhD का एग्जाम क्वालिफाई करना है. इफ़ यू हैव क्लियर्ड द JRF, राइट, अगर आपने JRF कर लिया है क्लियर तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, राइट. इट इज समवेयर अराउंड 38,000 to 40,000 डिपेंडिंग अपॉन द सिटी. एंड आप उसके बाद किसी भी प्रोफेसर की पोस्ट पे या लेक्चरर की पोस्ट पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा सकते हो. सैलरी भी इसकी बहुत अच्छी होती है. या फिर आप अपना इंडिपेंडेंट रिसर्चर बन सकते हो. देन देयर इज वन मोर इमर्जिंग फील्ड दैट इज मिलिट्री एंड डिफेंस साइकोलॉजी. सो इन BHU we had to choose between so many papers and one paper was defense psychology.
सो ऐसे यूनिवर्सिटीज में आपको इंडिपेंडेंट कुछ पेपर्स भी मिल सकते हैं, यू कैन एक्सप्लोर द मिलिट्री साइकोलॉजी एंड डिफेंस साइकोलॉजी. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग subfields in psychology. So you can work with DRDO, DIPR, you can also work with ISRO, you can also work with the all three wings of our defense, that is Army, Air Force and Navy. तो आप इनके साथ भी काम कर सकते हो. Alright? So ये कुछ important information थी related to careers in psychology. So again you must have understand this thing, और मैंने starting में ये चीज़ बता दी थी कि साइकोलॉजी में करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा डेड श्योर इसलिए नहीं हो सकते बिकॉज यू डोंट नो कि आप इवेंचुअली किस स्पेसिफिक फील्ड में किस ऑफिस में काम कर रहे होंगे. दिस इज होल लाइक अ इवोल्यूशन प्रोसेस. यू हैव टू कीप लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, बी अवेयर विद व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, राइट. क्या चल रहा है अभी आसपास. इफ यू वांट टू बी अ रिसर्चर, राइट, आपको अभी पता होना चाहिए कि आसपास रिसर्च में क्या चल रहा है अभी, है ना. तो ये सारी चीज़ों को आपको अपडेट रहना पड़ेगा एंड ये कोई भी प्रोफेसर आपको नहीं सिखाएगा, या आपके अंदर खुद से आएगा, आपको खुद से करना पड़ेगा. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर और you want to start your preparation, you can join my course. It is live right now. See you soon in the next video. All the best for your preparation.